को स्वागत किया है मेरे यूट्यूब चैनल से और बात करेंगे आप लोगों के साथ आज स्टॉक टू वॉच ITC होटल्स AU SFB टाटा कैपिटल LTIMindtree CEAT Ola Electric HPCL एंड अदर्स कंपनी के बारे में आज डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। और आप लोगों ने देखा जो स्टॉक टू वॉच शेयर्स ऑफ फर्म्स लाइक ITC होटल्स AU SFB Tata Capital LTIMindtree CEAT Ola Electric HPCL and others will be in focus on Tuesday's trade. Stock to watch today, January 20, 2026. Indian equities began the week on a weak note with the benchmark indices slipping nearly 0.5% and negative global and domestic cues. Technically, analysis notes that the Nifty breaks below the critical 25,600 support level, signal an extension of the near-term corrective phase, with the next support seen in the 25,300 to 25,400 zone. In case of a rebound, 25,600 followed by 25,800 is expected to act as a strong resistance despite the border weakness. Selected the sector and themes continue to show relative strength, and investors should therefore adopt a selective sector focus approach while maintaining strict risk discipline, said Ajit Mishra, SVP, Research Religare Broking. दोस्तों आप लोगों ने देखा, आज आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं हम आप लोगों को देखा जो स्टॉक टू वॉच ITC का जो स्टॉक है इस बारे में आप लोगों को डिस्कस कर रहे हैं। और जो स्टॉक टू वॉच शेयर फ्रॉम लाइक ITC होटल AU SFB टाटा कैपिटल LTIMindtree CEAT Ola Electric HPCL एंड अदर्स विल बी इन फोकस टू द ट्रेड के लिए आज इस जो कंपनी है आज फोकस कर सकता है जो ITC होटल AU SFB टाटा कैपिटल LTIMindtree CEAT Ola Electric और HPCL and others। और आप लोगों ने देखा जो आज जो 20 जनवरी 2026 और स्टॉक टू वॉच टुडे आप लोगों ने देखा इंडियन इक्विटीज बिगन द वीक ऑन द वीक नोट्स विद द बेंचमार्क indices slipping nearly 0.5% amid negative global and domestic cues. और जो Nifty breach below the critical 25,600 support level, signal an extension of the narrative the corrective phase.